Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So this is a orientation come first class for RBI DEPR exam. So first of all, I will take first half an hour basically for explaining the examination strategy for this year exam for 2022. So initially I will be explaining the examination strategy, the selection format, that is the examination format, and then what will be the sources, what is expected from you, what we will be providing, and what are the critical we can say the areas to focus during the preparation. So first thing is the scheme of exam. Most of you must be familiar with the scheme of exam, but still to start with, the scheme of exam or scheme of selection is, you can say, first paper will be an objective pattern. It is written on economics, but it will include questions from econometrics, maths and stats as well, along with micro, macro, growth and development, international economics. It is basically multiple choice question, objective type exam, 120 minutes, 2 hours and 100 marks. This is basically your phase 1. Students who qualify in this phase 1 will appear in phase 2. Phase 2 will have paper 2 and paper 3. Second paper is descriptive type on economics. Question paper displayed on computer, answer to be written on paper. And paper 3 is English, descriptive to be typed with the help of keyboard. So that will be 90 minutes, 100 marks, and this is 180 minutes, so it is 3-hour exam and 100 marks. So 300 marks, first stage, phase 1, paper 1 only. Students who qualify in phase 1 will appear in phase 2, and in phase 2 they will write paper 2 and paper 3. Combined paper 1, 2 and 3. The cutoff will be decided then for the interview stage, and the weightage for interview is 75 marks. So out of then 375, the final list will be prepared. So I will just write the scheme of exam here first. Your phase 1, remember, it is not only qualifying, you have to qualify as well as you have to score more here also, because this will be counted in your final selection. So phase 1 is paper 1. Paper 1 can be divided broadly into 2 parts. One will be the economics and other, I will write it here, econometrics or ecotics. Few questions from stats, maths. Weightage for this paper 1 is 100 marks. Micro, further you can divide in economics, further you can divide it into micro, then macro. Macro may include national income accounting also, then growth and development, then international economics, few questions, and few questions from the Indian economy as well. But those questions are basically coming from economic survey or RBI bulletin. So few questions from the Indian economy, current based questions. So economics I am dividing it into micro, macro, growth and development, international economics. Further we will find division for micro, like market structure is one section, then production cost will be another section. After that utility function or consumer theory will be the third section. So broadly you can divide micro further into 3 or 4 subparts. And macro, further it can be divided into one important topic जहाँ से frequently question आ रहे हैं, that will be ISLM.
then inflation and unemployment section. Balance of payment can be considered as a part of this macro, otherwise you can consider as a part of international also. International we can divide it into two parts. All theories of international trade like Ricardian model, HO model, specific factor model, then standard trade model, and the other part will be the balance of payment and foreign exchange market. So remember the syllabus simply say that you have to be familiar with the master's content. तो मास्टर लेवल पे जो भी आपने पढ़ रखा उससे फेमिलियरिटी है. नाउ फर्स्ट फेज जो पेपर 1 है, the question pattern basically you will find question of 1 marks weightage also, 2 marks weightage also, 3 marks as well as 4 marks. So it is not that you are getting 100 question of 1 marks each. वेटेज डिफरेंट होंगे हर क्वेश्चन के अंदर. 1 मार्कर भी है, 2 मार्कर भी है, 3 मार्कर भी है, 4 मार्कर भी है. Remember, so you generally question of 2 marks and 4 marks is coming in econometrics section, and 1 marker, 2 marker, 3 marker question is coming in the economics section. So the 1 marker question will be basically a straight question. I will give some example what I am saying, and 4 marker question will be basically involving some calculation. It will be, that means it will be some you can say time consuming. इवन इन माइक्रो लाइक कोऑर्डिनेट मॉडल के कुछ न्यूमेरिकल हो गए, सोलो मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर. तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. जहाँ न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड है वो न्यूमेरिकल एंगल से एक्सप्लेन करना है. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ये क्रिटिकल है आपका फेज 1, बिकॉज इफ यू फेल हियर देन यू आर नॉट राइटिंग फेज 2. सो यू हैव टू क्वालिफाई इन फेज 1 फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 100 मार्क्स लास्ट ईयर के पेपर को अगर एनालाइज करें तो लास्ट ईयर आई थिंक 62 क्वेश्चन वर देयर. दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन. आउट ऑफ दैट 62 क्वेश्चन सम वर ऑफ 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड फ्यू क्वेश्चन वर विद अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स. तो ये 62 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, 2 घंटे का पेपर है. तो स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एज वेल एज एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो फेज़ 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ द क्वेश्चन इज बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो इट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव पैटर्न. तो जो कंटेंट आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है उसको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से प्रिपेयर करना है. तो कुछ टिपिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस एरिया को एम्फसाइज करना है. उस एरियाज में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन पेपर 1 ऑल्सो, बिकॉज ये काउंट होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर. बट थोड़ा सा केयरफुल एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी भी आपको साथ में अगर एक्सप्लेन करें तो कट ऑफ का ध्यान रखना है आपको. प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बट रेफरेंस अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ले लें तो प्रीवियस से जो कट ऑफ आपको साइट पे मिल जाएगा आरबीआई के 2021 के लिए. दिस कट ऑफ इन फॉर पेपर 1 दैट इज फेज 1 was 46.67 फॉर जनरल कैटेगरी. ठीक है, it was 46.67 for general category. Then 46.67 for OBC as well and for EWS as well. Clear? बट सेकेंड फेज का मतलब हो गया जो ये नंबर आप देख रहे हैं ये फेज 1 और फेज 2 को क्यूमुलेट करके. सो दैट कट ऑफ वाज 164 आउट ऑफ 300 एंड दिस 236 यू आर फाइंडिंग आउट ऑफ 375 है. तो 236 आउट ऑफ 375, ठीक है, 375 के दैट मीन्स अराउंड ऑब्वियसली 60% प्लस कट ऑफ हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए. आप फाइनल सिलेक्शन में अगर 60% प्लस है, अराउंड 65-66% टू बी ऑन सेफर साइड. बट यू फाइंड फेज 1 एट 46. फेज 2 में भी अगर ये 164 है तो फेज 2 के अंदर भी ये 164 है आउट ऑफ 300. तो ये कट ऑफ ऑब्वियसली फेज 1 के कंपेरिजन में हायर हो रहा है. एंड द रीजन फॉर डिफरेंस इज दैट फर्स्ट फेज के अंदर नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, तो फर्स्ट फेज के अंदर नेगेटिव मार्किंग है और वो नेगेटिव भी वेरिएबल है.
It is not across 1/3 for all question. For 4 marks question, for 2 marks question, it is 1/2, and for 1 mark question and 3 marks question, it is 1/3. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपने अगर गलत किया तो नेगेटिव 1/3 हो गया, 3 नंबर के क्वेश्चन गलत कर दिए तो नेगेटिव 1 हो गए, 4 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव 2 हो गए। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव मार्किंग ये कट ऑफ फेज 1 के अंदर लोअर है। नाउ नोइंग दैट कि फेज 1 के अंदर कट ऑफ लोअर है, दैट मीन्स फॉर टू क्वालिफाई इन फेज 1, इफ यू टॉक अबाउट द जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है, तो 46.67 वाज कट ऑफ फॉर 3 कैटेगरीज। ना सपोज अगर वेरिएशन आ भी जाता है 2% हायर भी हो कट ऑफ, तो टू बी ऑन सेफर साइड 2% अगर हायर भी ले लें, मतलब 50% भी अगर हम एम करते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ। बट अगर आप 50% फेज 1 में स्कोर करते हैं, नोइंग दैट कि फेज 2 का जो कट ऑफ है वो अराउंड 60% जाएगा और फाइनल जो कट ऑफ है वो मोर देन 60% हो गया, तो जस्ट क्वालिफाई करना फेज 1 में हमारा एम नहीं है कि आप फेज 1 क्लियर करेंगे और फेज 2 देना है, यू हैव टू क्वालिफाई फाइनली। तो फाइनली क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू, आई विल से 60% प्लस होना चाहिए इन ऑल स्टेजेस, फेज 1, फेज 2 एज वेल एज फेज 3, दैट विल बी इंटरव्यू। तो 60% प्लस का टारगेट बेसिकली आपको लेके चलना है इन ऑल। फाइनल कट ऑफ के अगर परसेंटेज के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें तो 236 आ रहा है आपका ओवरऑल एग्रीगेट आउट ऑफ 375। बट सिंस फेज 1, यहाँ पे एग्जामिनेशन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 1 के लिए पर्टिकुलरली, knowing this cutoff and knowing the final requirement also, because negative marking की वजह से I will suggest to attempt 80%, that means out of 100 आपने 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट मैं इसलिए कम कह रहा हूँ बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उतने चांसेस भी होंगे नेगेटिव होने के। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 80% क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, दिस इज योर अटेम्प्टेड क्वेश्चन 80%, 80 मार्क्स यू कैन से, एंड मेंटेन एन एक्यूरेसी ऑफ 80% हियर ऑल्सो। 80% अटेम्प्ट कर रहे हैं और 80% की एक्यूरेसी है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके 64, 80 का 80% कर लिया, 16 क्वेश्चन गलत हो गए। लेट अस अज्यूम वो ऑल 16 क्वेश्चन विथ ग्रेटर नेगेटिव मार्किंग के हो गए, 1/2 वाले हो गए, वो सारे नेगेटिव 1/2 वाले हो गए, तो 16 का 1/2 दैट मीन्स 8 नेगेटिव हो गए। सो योर नेट स्कोर इन दैट केस विल बी 56, good enough to qualify but not that much good enough to be in final list. Final list के लिए you have to score I think more, but स्टेज 1 में अगर हम रिस्क अवर्स हो करके भी चलते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। सपोज आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे कर दिए और नेगेटिव भी ज़्यादा हो गए तो ये कट ऑफ 56 से भी नीचे या 50 के नीचे चला गया। बॉर्डर लाइन पे अगर हो जाते हैं तो फिर स्टेज 1 ही अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर बाकी स्टेज भी क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ी आई थिंक स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट को लेनी है थोड़ा प्रैक्टिकल लेना है। यू हैव टू मैक्सिमाइज नो डाउट, बट नोइंग दैट दिस इज क्रिटिकल स्टेज और ऑफ एग्जाम, तो इस यहाँ पे थोड़ा रिस्क अवर्स लेके स्ट्रैटेजी लेके चलना। मतलब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज क्रिकेट की एनालॉजी अगर आप ले लो तो पावर प्ले में आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर, बट रिस्क इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि बोल्ड हो जाओ, तो अदरवाइज तो फिर फेज़ 2 और इंटरव्यू लेटर हो गया। तो फेज़ 1 में क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फेज़ 1 क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, और क्लियर करने के साथ ये सेफ है। आई थिंक 56-60 का जो स्कोर होगा आई थिंक दैट विल बी डिसेंट स्कोर। ये क्लियर हो जाता है तो फिर फेज़ 2 और इंटरव्यू वाले पार्ट में आप थोड़ा और पुश कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द रीज़न फॉर लोअर कट ऑफ इन फेज़ 1 एंड हायर इन फेज़ 2 एंड फाइनल। क्लियर?
तो कट ऑफ का ध्यान रखेंगे, बट ये नहीं कि बॉर्डर लाइन का ही से प्रिपरेशन करना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर आई थिंक मोर देन 50%। मोर देन 50% है तो आई डोंट थिंक एनी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आती है तो स्टेज 1 में कोई प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है जब आप अटेम्प्ट ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो और फिर एरर भी, एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाई। आपने 100% अटेम्प्ट कर दिया और 60% की एक्यूरेसी हो गई, तो 60% की एक्यूरेसी अगर 100% मान लेटर से स्टूडेंट अटेम्प्टेड 100% और 60% की एक्यूरेसी हो गई तो 40 क्वेश्चन तो गलत हो गए। अब 1/3 का भी नेगेटिव अगर आप ले ले तो 13-14 क्वेश्चन वैसे निकल गए। तो 60 में से भी 13-14 क्वेश्चन कर दे तो वो आप 45 के आसपास आ गए नंबर। ठीक है, तो दैट इज आई विल नॉट सजेस्ट टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, I think ideal strategy will be attempt 80%, maintain accuracy of at least 80%. If you can maintain accuracy of 90% तो वो 60 plus हो जाएगा। That means you are leaving 20% क्वेश्चन एंड जो अटेम्प्ट किया उसमें भी आप 20% क्वेश्चन गलत कर रहे हो या अगर 10% क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली विल बी द स्टडी फॉर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चन ओपन में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए लिमिटेशन पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए होता है। फेज़ 2 के क्वेश्चन पेपर 2 के और पेपर 3 के अवेलेबल होते हैं, तो फॉर रेफरेंस यू हैव अवेलेबल। बट स्टिल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उससे आइडियाज़, जो एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इन माइक्रो व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, विद इन मार्केट स्ट्रक्चर कॉर्नर मॉडल, मैक्रो के इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देर आर वेरियस ग्रोथ मॉडल, बट सोलो मॉडल के न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। मैक्रो के अंदर ISLM के न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो जो एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस विल बी गिविंग यू एवरी डे सम प्रॉब्लम सेट, दिस टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी गेटिंग। So just for example, suppose a macro ISLM topic if we start, then numerical question basically यहाँ पे practice करने के लिए, as well as it is not only numerical, it will be including some conceptual question as well. So calculation based question will be there, along with that some analytical question and objective based question will be there. Just for example, suppose these type of questions, suppose you face that Keynesian theory of distribution, dynamic theory of profit, risk theory of profit, who has given those theories, just you have to match. तो ये factual information हो गया। Then what is the concept of super multiplier? Then questions like state questions like in this form. According to the absolute income hypothesis, consumption function is non-linear, linear but non-proportional, proportional, linear and proportional. तो यहाँ पे अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मालूम है और ऐसे क्वेश्चन आपने कई सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगना, कैलकुलेशन लॉल नहीं है। दिस विल बी बेसिकली फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे। लाइक इफ APC इज ग्रेटर देन MPC एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, इट फॉलोज दैट। नाउ 4 ऑप्शंस। Demand for money balance for speculative purpose depends on which factor? Now those questions will not take time, but if you are solving this type of numerical, some information is given, based upon that information few questions are there, then option will be there, then it will take some time to calculate. So those question we can say could be in 2 marks or it could be in 4 marks. ठीक है, अलग अलग वेटेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। So every day in fact will be providing some problem set, approximately 20-25 question. So over a period of time I think phase 1 के लिए you will be getting more than 1000, around 1500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, more than enough। ठीक है, फाइनली आपको 62 अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पे, या जो भी फॉर्मेट रहता है नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज वो वेरिएबल भी थोड़ा रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट एवरी डे ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे। Some of those questions we will be solving in the class. The approach of class will be explaining the concept. You have to understand the things, then you have to apply those concepts
और अप्लाई करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। क्लियर? तो दिस विल बी बेसिकली फॉर मैक्रो को फर्दर डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। सिमिलरली विल बी गेटिंग क्वेश्चन फॉर माइक्रो, से इन माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर विल बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ अ कॉस्ट फंक्शन इज गिवन देन फाइंड आउट द शटडाउन प्राइस। 4 ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। व्हाट इज द करेक्ट शटडाउन प्राइस? Find the firm's short-run supply curve. So from any given cost function, can you calculate shutdown price? Can you derive the short-run supply curve? Now this question are basically we can say not difficult question. और कॉर्नेट मॉडल के जब क्वेश्चन होंगे तो कॉर्नेट मॉडल के क्वेश्चन या बर्टन मॉडल के जो क्वेश्चन होंगे दे विल टेक सम टाइम। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक द एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू, what is the area below the marginal cost curve? Is it total cost or total variable cost or total fixed cost or average fixed cost? So if you add all marginal costs, what you will get? If you add all marginal costs, you will get what? Total variable cost. Although जब हम total cost को differentiate करते हैं तो भी marginal cost आता है, total variable को differentiate करेंगे तो भी marginal cost आएगा, but when you integrate then you will getting basically total variable cost. तो ये एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। A monopolist will never produce a quantity where price elasticity demand is inelastic because, तो ये concept based question basically required हो जाएंगे। तो these type of question obviously problem set के अंदर आपको मिलेगा every day। अब students अगर online कर रहे हैं तो ये सारे uploaded होंगे आपके site के ऊपर, वहाँ से आप उसको download कर लीजिएगा। Those who are attending offline they can collect it at from reception। तो ये मेंटेन करना आपको सब जगह एक स्पाइरल मेंटेन करते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब अकुमुलेट हो जाएगा, और प्लस यू विल बी गेटिंग सम ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द आंसर्स ऑफ दिस एज वेल। सो दिस विल बी बेसिकली गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी फॉर योर पेपर 1। पेपर 1 की स्ट्रेटजी बेसिकली ये रहेगी। क्लियर? सो आई थिंक टॉपिक वाइज जो लिस्ट करना है इसमें अपार्ट फ्रॉम कोर फ्यू इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है। तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो करंट ईयर का 21-22 का, उस सर्वे से फेमिलियरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट। इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग द एंटायर सर्वे, जस्ट रीड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी, एंड आई विल सजेस्ट वन मोर चैप्टर दैट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट। सिंस आरबीआई का पेपर है तो आरबीआई के पेपर में उस चैप्टर के क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया? Knowing money multiplier theoretically is different thing, and what is the money multiplier value in India, that is a fact। तो वो इंफॉर्मेशन आपको सर्वे के अंदर मिल जाएगा। ब्रॉड मनी का ग्रोथ कितना है, नैरो मनी का ग्रोथ कितना है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या किए गए, कोविड के कंटेक्स्ट में क्या रिस्पॉन्स रहा मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो यू मस्ट बी नोइंग दोज कंसेप्ट as well as you must be knowing the exact value, what is the current value of those policy rates। so study material आपको सर्च नहीं करना, remember जो if you are attending this class, remember you don't have to search for the study material, we will be providing you all like a study from where to study। क्लास को just focus करना है और जो प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं उसको करना है। 1500-2000 क्वेश्चन अगर हम फेज 1 के लिए कवर कर लेते हैं तो दैट विल बी गुड इनफ। यू नीड प्रैक्टिस। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बुक बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उस बुक को बार बार रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कोर एरियाज होंगे वहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट होगा, एंड इवन दैट विल बी एक्सप्लेन इन द क्लास। सो द क्लास इन इटसेल्फ विल बी कंप्लीट, इट विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, और जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आई थिंक दिस विल गोइंग टू बी द स्टडी फॉर फेज 1। इकोटेक्स और स्टैट्स के अंदर भी कुछ टिपिकल क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाए, मतलब जैसे लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट मॉडल के क्वेश्चन है, ध्यानतिप वाले वो क्वेश्चन रिपीटेडली है। तो सर्टेन एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर, सिलेक्शन होना ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना ज़्यादा टाइम डिवोट कर रखा है। इंपॉर्टेंट ये कि जो टाइम आपने डिवोट किया वो किस टॉपिक पे डिवोट किया, किस एरिया पे डिवोट किया, और उससे रिलेटेड कितने आपने प्रैक्टिस किए हुए। सो योर अंडरस्टैंडिंग इज़ वन थिंग
ability to apply that is another thing. Practice will be the third thing. So understanding is obviously the core. Application is second important thing, and accuracy after that, maintaining accuracy and overall the temperament to deal with the exam. So this is your phase 1. Then phase 2. If you come to phase 2, this will be paper second, and it is descriptive. Second paper is descriptive. Now in that second paper जो क्वेश्चन अवेलेबल है, ऑल्दो एवरी ईयर एग्जाम नहीं हुए, बट जो अवेलेबल है उसमें साइट पे वो 2016 का अवेलेबल है, 13 के कुछ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है. यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10. अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 10. सो दिस सेकेंड पेपर ऑफ 100 मार्क्स 3 आवर का पेपर है, और 3 आवर के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, एंड देन 10 क्वेश्चंस आर देयर. दैट मीन्स इनफ चॉइस है. टेन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का एरिया आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम विच एरिया दे आर कमिंग, और वो पैटर्न एक्चुअल में है. इफ यू सी दोज क्वेश्चन you will find 1 or 2 question from the growth and development section. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन से 1 और 2 क्वेश्चन है, रेगुलरली है. अब फर्स्ट फेज में अगर वो सोलो मॉडल के न्यूमेरिकल पूछ ले रहे हैं, तो सेकंड फेज में यूजुअली सोलो मॉडल के क्वेश्चन नहीं है. लेटे से लुइस मॉडल का क्वेश्चन हो गया, या लाइक जैसे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी गिवन बाय लेविंस्टियन. प्लस बट देर आर मेनी मॉडल्स. If you are reading solo model, then there is AK model, Romer model, endogenous growth model, exogenous growth model, Lewis theory, Harris-Todaro model, critical minimum effort theory, dependency model. तो कौन से क्वेश्चन आएंगे वो नहीं कह सकते, बट अगर आप 10-12 मॉडल आपने कवर कर लिया है, तो आउट ऑफ दोज 10 और 12 मॉडल्स यू विल बी गेटिंग 1 और 2. कुछ फेज 1 में मिल जाएंगे, कुछ फेज 2 के अंदर मिल जाएंगे. और जैसे कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, I think one more question was there in the same year, golden age of John Robinson model. So you find 2 question here. लियोंते पैराडॉक्स का क्वेश्चन हो गया, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो सेकंड एरिया होगा वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एरिया कवर करना है. इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यू हैव टू कवर थियरीज, दैट मीन्स यू मस्ट बी नोइंग एचओ मॉडल, रिकार्डन मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल. बट नोइंग दोज मॉडल इज वन थिंग, और स्कोर करना डिफरेंट है. तो ये पॉसिबल है कि यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी. बट क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी को आपको ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं. हाउ विल जस्टिफाई? अब 20 मार्क्स में ऑब्वियसली नोइंग दैट द कट ऑफ विल बी अराउंड मोर देन 60% है. फाइनल कट ऑफ लेटेस्ट से अराउंड 65-66 पे आप सेफ होने के लिए अगर एम कर रहे हैं, तो आउट ऑफ दिस 20 यू हैव टू स्कोर 13 प्लस. नाउ व्हाट यू विल राइट सो दैट एग्जामिनर विल गिव यू लेट अस से 14 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. आप उसमें ऐसा क्या लिख देंगे कि वो 14 मार्क्स या 13 मार्क्स आपको उस क्वेश्चन के अंदर मिल जाए. अगर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो द कंसेप्ट एंड देन यू विल बी एक्सप्रेसिंग इन योर ओन वर्ड्स, तो प्रॉब्लम है. What is needed in this type of examination is that you must know the concept and explain the concept as explained by that economist. So if this critical minimum effort theory was given by Levinstein, तो Levinstein ने जैसे explain किया है, जो words use किए, आप exactly वही words यहाँ पे apply करेंगे कि what are the stimulus agents, what are the growth agents, income depressing factor. तो ये जो critical words हैं वो आपको दिखने चाहिए वहाँ पे, और एज इट इज लिखना है जैसे एक्सप्लेन किया गया मॉडल के अंदर. सो आई कीप ऑन रिपीटिंग दैट सेम थिंग. इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू मस्ट बी रीडिंग दोज टॉपिक
from the core book and try to reproduce it in the paper, but reproducing it in the paper is not a very easy thing. बुक का लैंग्वेज आप पेपर में लिख दो, ये डिफिकल्ट है, बट यू कैन डू सो इफ यू हैव रिटन दोज आंसर्स 1 or 2 times अर्लियर. एक दो बार आपने अगर पहले से लिख रखा है देन यू कैन राइट इट इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट अगर आपने एज इट इज एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कर रखा है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. डिफिकल्ट इन द सेंस उतने नंबर नहीं है यहाँ पे. इंपॉर्टेंट ये नहीं, दिस नॉट अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम कि आपको सर्टेन 50 नंबर लाने हैं, 40 नंबर स्कोर करने हैं. आपको वो रिक्वायरमेंट मीट करना है. मार्क्स जो देने वाली अथॉरिटी है उसका एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बेसिकली कंप्लाई. तो ये कंप्लाई करना, तो फॉर दैट पर्पस आप एग्जैक्टनेस पे ध्यान देंगे. देन आई फाइंड इवेल्युएट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. अब ये फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन आप जितनी ईयर में देखें, कभी फेडरलिज्म के फॉर्म में, फिजिकल फेडरलिज्म के फॉर्म में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन रेगुलरली हैं. दैट मीन्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस एरिया यू आर गेटिंग वन क्वेश्चन, बट पब्लिक फाइनेंस इज नॉट ओनली फिजिकल फाइनेंस कमीशन. इसमें जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है. आई थिंक दैट क्वेश्चन इज देयर. रिसेंट ट्रेंड्स इन द रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इंसेंटिव. अब ये रिसेंट ट्रेंड इन द रेवेन्यू इम्पैक्ट, अब ये क्वेश्चन 2016 का है. सपोज करंट कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया कोविड के कंटेक्स्ट में, कि कोविड कंटेक्स्ट में टैक्स कंस्ट्रेंट क्या है, टैक्स रेवेन्यू का जो पैटर्न है वो क्या है. अब ये पैटर्न वगैरह वाले जो क्वेश्चन होंगे आपको मेनली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाएंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप रेफर कर रहे हो तो उससे आप फेज़ 1 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज वेल एज फेज़ 2 के क्वेश्चन के ऊपर. Then what are the challenges faced by public sector bank in the changing environment due to privatization and globalization? Now banks का merger का क्वेश्चन हो सकता है, banks के NPS related क्वेश्चन हो सकते हैं. So banking related, so you will find that banking related question in that monetary management chapter of economic survey. So some areas in this, one more question you can say. ये क्वेश्चन 13 वाले ईयर का है, लाइक exchange rate depreciation helps to improve the balance of payment discussed in the context of Indian economy. Now how exchange rate depreciation helps in improving the balance of payment? Now you can answer this question if you know how depreciation will impact the export and import. What is the meaning of depreciation? How depreciation makes exports relatively cheaper, imports relatively expensive, and how it will improve the balance of payment. But ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो when you are explaining that depreciation wise question, obviously J curve impact भी आ जाएगा इसके अंदर. तो international economics के related you will find this question, like then growth and development, I was saying 1 or 2 model you will find always. So this Lewis theory of unlimited supply of labor in the Indian context, public private partnership. So 2 or 3 question you are getting from the growth and development section. So growth and development will be an important area. Remember 10 question are there, you have to attempt 5. 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. एंड इफ आई फाइंड दैट 2 or 3 क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन, सो इफ आई प्रिपेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन एक्सटेंसिवली, देन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन you can write from growth and development section. If you cover international, then another 1 or 2 क्वेश्चन you can add. और जो रिसेंट बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक हो गए, लाइक इकोनॉमिक सर्वे आपको एनी हाउ पढ़ना है, तो सर्वे वाले क्वेश्चन से जो रिसेंट क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड अनदर क्वेश्चन यू विल आई एम फाइंडिंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस सेक्शन. पब्लिक फाइनेंस, लाइक इन दिस ईयर एज वेल द क्वेश्चन वाज की रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन. तो अब आपसे 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन पूछ लिया करंट, हाउ 15th फाइनेंस कमीशन was different from the 14th फाइनेंस कमीशन, what was the controversy involved here. तो फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन रिपीटेडली है. तो इफ यू चूज पब्लिक फाइनेंस 1 सेक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनदर सेक्शन, इंटरनेशनल 3rd सेक्शन, एंड इकोनॉमिक सर्वे
Recent programs like National Food Security Bill of 2013 main features. करंट में लेटेस्ट है पीएम गति शक्ति. अब इसके ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, राइट अ नोट ऑन दैट. ठीक है. या एमएसएमई impact of COVID-19 pandemic on MSME sector. So you will find those answers in the economic survey. So if I try to write the content for this paper 2, then in paper 2 I think main areas will be growth and development is one important area. Here in the growth and development section I will suggest prepare all growth and all models starting from the Harrod-Domer model, Solo model, AK model, Romer model, endogenous growth model, Lewis model, Harris-Todaro model, Livingston theory, critical minimum effort, dependency model, limits to growth. So prepare all, because from here you will be getting around 2 questions. और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर का लिखना है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल, और वो प्रैक्टिस करके रखिएगा. मतलब कंटेंट आपके पास वो लिखा होना चाहिए 3 to 4 साइड्स का किसी मॉडल के ऊपर, और वो एग्जैक्ट होना चाहिए. इनिशियल पैराग्राफ एग्जैक्ट, लाइक लुइस मॉडल का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूलिज्म, हाउ इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्यूलिज्म एंड हाउ dualism get over in the course of the development. So growth and development will be an important area. To cover this growth and development, one important book is can go by M.L. Jingen, otherwise 2 chapters from Devraj Ray, and for Romer model you can refer Jones, chapter number 4 and 5, only 2 chapter. Devraj Ray maybe you have to cover I think only 2 or 3 chapter maximum. For Lewis model, for Harris-Todaro model, and for Solo model. And M.L. Jingen is wider, मतलब वहाँ पे शॉर्ट कंसेप्ट में आपको बहुत सारे मॉडल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. बैलेंस अप्रोच, बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, बिग पुश थ्योरी. So growth and development will be one important area. Then another important will be international economics. Remember, you can note one thing. In phase 1 I was focusing on market structure and micro, but here you don't find any question on the market structure. In phase 1 the question was basically on the ISLM, numerical or concept wise, but in phase 2 macro वाले पार्ट का ISLM क्वेश्चन, ISLM वाला टॉपिक नहीं है. तो स्लाइटली आपकी जो स्टडी है फेज 2 की वो डिफरेंट है. बट फेज 2 यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर फेज 2 आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर फेज 1, बिकॉज फेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को हो जाएगा. इन अ वीक यूजुअली रिजल्ट आ जाते हैं. सो सपोज यू गेट रिजल्ट बाय 10th जुलाई, बट फेज 2 का एग्ज़ाम आपका 6 अगस्त को है. सो यू आर गेटिंग लेस देन अ मंथ. नाउ इन लेस देन अ मंथ you can prepare, but you cannot leave entire preparation of phase 2 for that period. So you have to cover at least some part in phase initially as well. तो स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आपको पहले क्या फोकस करना है, ज़्यादा टाइम किस पे लगाना है, और फेज 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. यू विल फाइंड सम एरिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ. तो वो भी एरिया आपको आइडेंटिफाई करके रखना है. लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू विल फाइंड सम क्वेश्चन in phase 1, but that question is more numerical. In phase 2 it is more descriptive. पेपर में लिखा हुआ है, it is descriptive in nature. ठीक है. फर्स्ट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव टाइप. सो यू हैव टू एक्सप्लेन. And in the international, divide this into 2 part, like theories of trade, and include in this the balance of payment and exchange rate. Balance of payment and exchange rate. So that is an important section. Then because it is, the question is generally coming in the Indian context. So third important section will be the public finance.
Within that public finance commission recommendation is there. Question could be related to GST or overall tax trend or expenditure trend. Then इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लाइक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, modification in that act. Original act was of 2003, then further modification was brought in the context of encasing committee. So FRBM act. So one important area will be this, but public finance को आपको इंडियन कंटेक्स्ट में ज़्यादा पढ़ना है, थियोरेटिकल एंगल से कम पढ़ना. लाइक थियोरेटिकल एंगल इन द सेंस देयर आर approaches to tax equity, benefit principle of taxation, ability to pay principle of taxation, but you are not finding those questions. You are mainly finding question in public finance related to the Indian economy. And another area in for phase 2 will be the monetary management. Monetary management because पेपर RBI के लिए तो बैंकिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, so banking related question will be there. और ये phase 1 phase 2 दोनों के लिए पढ़ना आपको. phase 1 में you will be getting question related to the fact and concept. In phase 2 it is more analytical or descriptive. So questions related to the problem of NPAs, question related to the merger of banks, privatization of banks, overall banking sector performance or overall financial sector performance, banking sector reform committees, banking sector reform committee, that means Narasimhan committee 1, Narasimhan committee 2, how their recommendation differed. So from that angle, so this is one part. Second part, third part, it does not mean कि आप माइक्रो मैक्रो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं. ओवरऑल यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब ओवरऑल स्टडी स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारे होंगे, बट फोकस विल बी ऑन दीज एरियाज. एंड द अदर विल बी, यू कैन से, द करंट रिलेटेड पार्ट, current topics. In current topic you can include all type of recent schemes, because you are finding question on मनरेगा, you are finding question on Brexit. तो 16 में वो Brexit का क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो करंट डायमेंशन में लेटर से कोविड का इम्पैक्ट, ठीक है, या से क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है या पॉलिसी रिफॉर्म से क्या सजेशन है. तो करंट रिलेटेड जो टॉपिक होंगे दैट विल बी, वी कैन से, द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आई विल से सर्टेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी के लिए इंक्लूड करें. अगर आप उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं तो सेक्टर वाइज डिवाइड करने पे ये मिलते हैं. और एक मिसलेनियस टॉपिक में आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का ले लिया, लेटर से FDI है, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा. बट आई थिंक जो 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर हमने ये 5 एरियाज आइडेंटिफाई कर रखा है, तो एटलीस्ट यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एरिया, दैट इज फॉर श्योर. 10 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट 5. If you identify these 5 areas, then from each, and if in every area you prepare, let us say, around 10 question, 10 question here, 10 question here, 10 question here, 10 question here, 10 question there. So you are preparing basically 50 question. Out of that 50, you will for sure you will be getting 5 question जो लिखने हैं. But to be on safer side, चलो 6 या 7 आनी चाहिए, so that we can choose. तो ये 5 areas आइडेंटिफाई करें, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा. डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट होता है, वो प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है. थियोरेटिकली, आइडियली स्पीकिंग, आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आ गया, यू विल से दैट ओके सर ये क्वेश्चन नहीं आ रखा था इस ईयर में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. आई कैन नॉट रूल इट आउट कि ये नहीं होगा या ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे. बट जो क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, आई विल से टू फोकस मोर ऑन दैट इनिशियली, दैट इज मोर प्रैक्टिकल स्टडी. जो रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब if a question has a probability of, let us say, 80% or 90% of coming, so I will prepare those questions first. If a question has a probability of, let us say, 5% of coming, I will prefer it for the later phase. If you have time, you can do it, otherwise no need. मतलब एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होनी चाहिए. दैट इज़ वाई कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा, मतलब इट इज़ नॉट बेसिकली paper where intelligence will be tested. Your examination strategy is more important.
how you deal with that. So a given format is there, a given requirement is there, you have to fulfill that requirement. जो मेन एम है उसको बोलना नहीं है, मेन एम है वो फाइनल लिस्ट में आपको आना है. अब उसको उस फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपके पास अभी 3 हर्डल है. फेज 1 पहला, फिर फेज 2 वहाँ क्लियर करना है, एंड देन द फाइनल लिस्ट. So your strategy for phase 1 will be slightly different. You are basically, I will say, risk covers, negative marking है, don't unnecessarily take the risk, but score enough, because just border line पे करेंगे तो भी वो वर्कआउट नहीं होगा, बट वो क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. फेज 2 यू हैव टू मैक्सिमाइज, बट मेरे कहने से मैक्सिमाइज नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. प्रिपेयर करने में बेसिकली वी विल बी हेल्पिंग. एग्जैक्ट आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे या क्लास के अंदर डिक्टेट कराए जा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है लेटर से वो रोमन मॉडल पे, सो व्हाट यू विल राइट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट यू राइटिंग इन द सेकंड पैराग्राफ, व्हाट यू राइटिंग इन द थर्ड पैराग्राफ. लर्न दोस कंटेंट, राइट it every day. I will suggest 1 or 2 question, and for practice purpose there will be a test. So now I am coming to basically the other part. So in this phase 2, paper 2 descriptive हो गया on economics, and paper 3 is basically your language. So third paper is language, वो 100 marks वो भी है, but 90 मिनट है उसके लिए for that purpose. Clear? So paper 3 is English descriptive to be typed with the help of keyboard. 90 मिनट. जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का नॉट डिफिकल्ट, बट बिकॉज वो काउंट होना है तो आपको वहाँ भी स्कोर करना है. आई विल जस्ट शो अ सैम्पल. कुछ क्वेश्चन साइट पे वहाँ अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अब हमारे साइट पे भी होगा. Write an essay on about 50 words on any of the following topic. Fundraising environment of the startup sector. Will the UK real estate fund issue impact India? Minimum government, maximum governance. 25 years of reform that changed India. That means even in this question you'll find जो current topics हैं उसके basis पे. So if you prepare around 10 topic recently related, that will help you in descriptive answer also, because the nature of some question is basically economic also. So you have to write basically on any one. So again 5 questions are there. So if you prepare and choose certain topic, and on that topic 5 or 10 सब topic create कर लिए और उस पर अराउंड 500 वर्ड्स का आपने कंटेंट रेडी रखा हुआ है, तो आई गेस कि वो मिल जाना चाहिए आपको क्वेश्चन. देन प्रेस इज देयर, ये 40 मार्क्स का तो आपका ऐसे हो जाएगा. 24 मार्क्स फॉर प्रेसी, एंड 20 marks for this question. Attempt any one of the following in about 250 words. Explain briefly the conceptual meaning of any of the 3 terms. Okay, तो format easy है, but you require some practice. So we will be providing assistance for paper 3 as well. Okay, it is not for only paper 1, it is for paper 1, paper 2, paper 3, as well as your interview guidance. That means we will be helping you to get in the final list, just not to make you qualify for phase 2. The purpose is not to just help in phase 1. So phase 1 is critical, phase 2 is critical, phase 2 के दोनों पेपर क्रिटिकल हैं, और इंटरव्यू का जो स्टेज है वो भी क्रिटिकल है. क्लियर? So what we will be doing now, this is what is required for examination, and now question is how we will be providing you the lecture, and in what way we are helping you. So one will be your a regular batch, which is commencing today, that is 7th April. This regular batch will be having approximately 200 hour lecture.
That means you can say 100 lecture approx of 2 hours spread over next 3 months or 3.5 months, you can say April, May, June and then July as well for phase 2. तो इट इज़ नॉट दैट फेज़ 2 हम जुलाई के बाद ही लेंगे, 2 जुलाई के बाद ही होना है. फेज़ 2 के भी कंटेंट आपको स्टार्ट में प्रिपेयर करके रखने. तो इन टोटल इट विल बी ऑफ 200 आवर lecture, and I said in every lecture will be getting problem set. So if 100, if in the every class I will give you 20 question, then 2000 question is there for practice. This regular batch will also include your test series. In that test series there will be 10 tests in total. Out of 10, paper 1, which is phase 1, you will write 5 tests, and then phase 2. In phase 2, paper 2 and paper 3. Paper 3 is a language, English. So for paper 2, in fact 4, and for English for practice 1. So in total there will be 10 tests, and that test will start from 1st of May. Schedule is there, uploaded होगा site पे, वहाँ देख लेंगे. Your first paper 1st May, objective type, but I will inform you that the first paper will be mainly covering the economics question, micro macro question. That means you can say it is sectional. Second test will be again objective type paper 1, but that will be covering econometrics, stats and mathematical questions. So that is, you can say, another section. And from third paper it will become the comprehensive. That is overall जो micro macro equatex मिला करके जो question होंगे वो होंगे. ठीक है. Again, but format of each test will be exactly that, which is very similar to the actual paper. मतलब 62 क्वेश्चन होंगे, वैसे ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो वेटेज वेरी करता रहेगा, नेगेटिव मार्किंग वैसे ही अप्लाई होगी. सो 1st of May it will start. So your first 4 tests is for phase 1. So 29th of May, 1 test we are taking for phase 2, descriptive type, in June. Then 19th of June objective type. So by 19th of June आपके फर्स्ट फेज के टेस्ट हो जाएंगे. देन 2 जुलाई आपका पेपर हो जाएगा फेज 1 का, एंड आफ्टर दैट टेस्ट शेड्यूल फॉर फेज 2. 1 टेस्ट आपके पहले हो गए, 4 टेस्ट इधर हो गए. 31st of July that will be the last for the language paper. क्लियर. तो ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है. Now if students are taking this regular batch, then in that regular batch you are getting this lecture, all study material as well as the test. But if a student is not taking this regular batch, because बहुत सारे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस का या इकोनॉमिक सर्विस का पेपर दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि क्लास का कंटेंट तो हमें मालूम है, वी रिक्वायर ओनली प्रैक्टिस. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन राइटिंग दोज टेस्ट, देन यू कैन चूज ओनली टेस्ट. ठीक है. यू आर राइटिंग इन दैट केस ओनली टेस्ट. सो दोज टेस्ट आर फ्लेक्सिबल. ये नहीं कि 1st of May को अगर लिखा है तो 1st of May को ही देना है, अगर आपने मिस कर दिया तो वो मिस हो गया. वो यू कैन राइट इट लेटर ऑन ऑल्सो. वो इवेलुएट होगा और फिर उसके जो आंसर्स होंगे वो मिलेंगे इवेलुएट करके. तो ओनली टेस्ट यू कैन चूज, और इफ़ यू आर टेकिंग दिस रेगुलर बैच देन टेस्ट इज इंक्लूडेड इन दैट. सो फॉर दिस रेगुलर बैच द फीस यू कैन सी फ्रॉम साइट ऑल्सो. इट इज़ 21,000 which will include your GST, including your test series, including your 200 hour lecture. And if you take only test series, then it will be 75, including your GST. So whether you take it online or whether you take it offline. If a student has taken, let us say, online class, but if he wants to attend the class, then he can switch over also, and vice versa. If you are attending offline class, if you want to go for online, then again you can do that. Clear. The advantage of online is that you can repeat that lecture. Same lecture जो भी कह रहा हूँ उसको आपने दोबारा सुन लिया. ठीक है. It is not unlimited, but you can repeat it twice, thrice. You can see that. ऑफलाइन क्लास के अंदर ऑब्वियसली एक बार आपने क्लास अटेंड कर ली, वो क्लास ओवर होगी. बट ऑनलाइन का वो एडवांटेज है. बट सिंस
उसका ड्रॉबैक्स भी हैं, जब चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन पे हो जाती हैं, कंफर्ट पे हो गया तो डिलेड हो जाएगा, आप एक ही दिन में 4 लेक्चर देख रहे हो और 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, तो रेगुलरिटी मिसिंग होती है. तो बोथ हैज़ देयर प्रोज एंड कॉन्स. सो बेसिकली क्लास इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. Clear? So I think I have explained everything related to the examination strategy, what is required for the paper, and in what way we are providing you the support. So now I can start with the content part, so that you will get to know what is required exactly and what is the format of the class. यहाँ तक जो content हो गया ये आपके we can say the part of orientation. Everything I think which you should know about the entrance exam of RBI DEPR. ठीक है, I think I have touched all aspect of it. Clear? तो strategy है वो important. Again I repeat few things. Strategy of your examination is very important, particularly for phase 1 and then for phase 2. In phase 1, score 80, attempt 80%, maintain an accuracy of at least 80%. You will land up at a score of 56, 58. That is safe enough for qualifying and good enough also for final. बट अगर फर्दर आप करते हैं, मैंने उसको मिनिमम बोला आपके लिए, अगर आप उसमें और ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी और मेंटेन करें दैट इज़ बेटर. बट रिस्क कवर्स वहाँ थोड़ा रखना है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि आपको फर्स्ट फेज़ में ही मैक्सिमाइज़ करना है, वहाँ पे एक रिस्क का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है. तो फर्स्ट क्लियर करना है, 56-60 भी रहता है गुड इनफ. देन मैक्सिमाइज इन फेज़ 2 बोथ पेपर एंड डोंट इग्नोर द लैंग्वेज बिकॉज 100 मार्क्स का पेपर वो भी है, एंड एज वेल एज द इंटरव्यू. क्लियर? सो वैकेंसीज ऐसे ही होती है अराउंड इस बार आई थिंक 31 सीट्स के लिए. तो बट कट ऑफ मोर और लेस सेम मेंटेन रहता है. क्लियर? सो आई कैन स्टार्ट नाउ विद द लेक्चर.